That's why we don't talk to our relatives, our teachers, because we feel that this is a stigma if you are being depressed. Again, I would say it is not abnormal to feel anxious. It is not abnormal to feel depressed sometimes in life. Every person goes through the phase. And another question which most of the public carries, that mentally healthy mean having no mental health problem. Again, I would like to make it clear that mentally healthy person can also have mental health issues. Only thing is that the remedy is that we need to acknowledge those mental health issues. The need of the hour to acknowledge those mental health issues so that we can overcome them. If they are not being acknowledged, then by doing the remedy for that, it will not there, then it may lead to mental illness. So I would say that if any person feels any mental health issue, then acknowledgement that working that particular issue, that is must, so that mental health issue cannot be converted into mental illness. Some students they do question that having mental health issue, is it a sign of weakness? No, it is not the sign of weakness. Rather, it is the sign of strength. When you acknowledge and talk about your mental health issues to your friends, to your family, or to the counselor, then it is a sign of strength, your mental strength. So don't take this. I would request all the audience that if sometime in their life they face any mental health issue, so please do share with your friends, do share with your teachers, do share with your elders. And in our university, special counseling center is there. Dr. Ruby Gupta is taking care of that cell. So then you can always come to the counseling center. And don't remain this optimistic bias that mental health problems cannot affect me. We can be affected. Only thing is we need to be very aware that we need to identify the trigger point. Uh, and sometimes we feel that if a person who has a mental health issue can never be a normal. So this is not the fact. Fact is the person having mental health issue can be normal after some time. So it is not abnormal to have mental health issue. Only thing is the starting point to be normal starts from the person within self. The person has to acknowledge, then to engage oneself into the remedy, then the person can be uh, free from those mental health issues. And the last thing I will talk about, that seeking mental health assistance, that is very much necessary. As we have seen in the recent past, Sushant Rajput case, because in the initial times he did not talk about this, he did not have that assistance. Later on he moved to the secretary. So it is not a indication of failure in life. If we are facing some mental health issues, it's not an indicator of failure. Don't take it as that it is a failure, because once you perceive it as a failure, it affects your mental health and it leads to another points like suicide, etc. So friends, students, don't perceive mental health as any such thing which cannot be overcome. For that, only thing is which you need to do, that is to enhance your mental immunity. Mental immunity, psychological immunity, that is the theme on which the speakers would speak. So because mental immunity is a sort of psychological layer of protection against any mental health issues. How we can develop mental immunity? It is not by resisting or denying negative thoughts, but by observing them, acknowledging them, and working upon them. So, as a psychologist, as an elder, my advice would be that in case you feel any sort of mental health issues, don't deny, because in mental health, the good mental health carries positive and negative emotions both.
Only we need to acknowledge and then to work upon them. So that it increases your self-esteem, your emotional maturity, because it protects your body from the toxins like constant worry, tension, anxiety. The way our biological immunity protects us from harmful substances, the same way psychological immunity can affect us. They can protect us from worry, tension, anxiety. So I would say that higher the level of psychoimmunity, better would be your mental health. So with these words, I wish you all a very good mental health for the years to come. And God bless you and keep motivating yourself and keep in high spirits. Thank you, Dr. Ruby. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Dr. Mamta Sharma, for enlightening our students on the various myths as well as the facts of mental health. Now, I would like to request Dr. Ajita, Additional Provost, Office of Teen Students Welfare, and who is Associate Professor and Head, Department of Sports Science, Punjabi University, Patiala, to enlighten our students on mind-body relationship. Dr. Ajita, over to you, please. Thank you, Dr. Ruby. A very good morning to all of you. Under the dynamic leadership of our worthy Vice Chancellor, Professor B.S. Kuman, and guidance and supervision of our Dean Student Welfare, Professor Tara Singh, and Additional Dean Student Welfare, Professor Paramjit Kaur Gill, our counselor, Dr. Ruby Gupta, has taken initiative to organize this webinar on World Mental Health Day. This is need of the hour during these pandemic situations, because in these days we all are under mental stress. Some are under our stress varies, actually its intensity varies. Sometimes we used to share, sometimes we want to hide our stress, but we all are under stress due to these pandemic situations. And it's a really matter of pride for me to be part of this webinar and to share my knowledge about mental health and physical activity. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਨ ਮੈਡਮ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ, ਵੀ ਐਡੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਹੈ. ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਇਟ in exercise physiology terms. It is important to note that mind is not synonymous with brain. Instead, in our definition, the mind consists of mental states such as thoughts, beliefs, attitudes, and images. The brain is the hardware that allows us to experience these mental states. Mental states can be fully conscious or unconscious. We can have emotional reactions to situations without being aware of why we are reacting. Each mental state has a physiology associated with it, a positive or negative effect felt in physical body. For example, the mental state of anxiety causes you to produce stress hormones. Many mind-body therapies focus on becoming more conscious of mental states and using these increased awareness to guide our mental states in a better, less destructive direction. Awareness of the mind-body connection is by no means new. Until approximately 300 years ago, virtually every system of medicine throughout the world treated the mind and body as a whole. But during the 17th century, the Western world started to see the mind and body as two distinct entities. In this view, the body was kind of like a machine, complete with replaceable, independent parts with no connection whatsoever to the mind.
This Western viewpoint had definite benefits, acting as the foundation for advances in surgery, trauma care, pharmaceuticals, and other areas of allopathic medicine. However, it is also greatly reduced scientific inquiry into humans' emotional and spiritual life and downplayed their innate ability to heal. In the 20th century, this view gradually started to change. Researchers began to study the mind body connection and scientifically demonstrate complex links between the body and mind. Integrative psychiatrist James Lake, MD of Stanford University, writes that extensive research has confirmed the medical and mental benefits of meditation, mindfulness training, yoga, and other mind body practices. So, physical activity should be viewed as continuum ranging from virtually no movement at all, for example, sedentary behavior or sitting time, through light physical activity like ambulation to moderate to vigorous physical activity like exercise, playing sports, cycling to work, while it is often moderate to vigorous physical activity and exercise that are considered to be associated with better mental health. We should not rule out the positive changes that can occur from lower down the continuum. It is also important to note that people have widely varying preferences for the types of activity they wish to engage in. Some of the mental health benefits may be associated with doing something people want to and enjoy. We should not be too prescriptive, therefore, concerning the types of activity we recommend for mental health. In the expanding literature on physical activity and mental health, researchers have addressed the effects of both single bouts and programs of physical activity. In addition, a wide variety of psychological outcomes have been studied, including effects on mood, self esteem, cognitive functioning and decline, depression, and quality of life. So, exercise actually helps to increase your it is a mood enhancer, sometimes it is said. Actually, chemically it releases hormones, certain hormones which are known as endorphins and serotonin, that improves your mood. It can also get you out of the world, help to reduce any feelings of loneliness and isolation, and put you in touch with other people. If you exercise regularly, it can reduce your stress and symptoms of mental health conditions like depression and anxiety and help with recovery from mental health issues. It can also improve your sleep, which is important in different ways. Physical activity can be an effective strategy for promoting mental health and well being and contribute to the treatment of mental health conditions. Even in conditions of schizophrenia, it has been proved as an very helpful therapy to improve schizophrenia and even certain cases of depression and well being. To further support the use of physical activity in the prevention and management of mental health conditions and other chronic conditions, a stronger evidence base is needed. The availability of high quality evidence remains limited, particularly with regard to appropriate amount of physical activity for people with mental health conditions and the size of effect of different interventions. Actually, the intensity, how much intensity of exercise is to be given to a particular person, it depends upon the capacity of the, there are a number of factors. Age is there, sex is there are number of factors on which we used to, while designing an exercise program, we used to taken care of these parameters. So this literature is lacking in when we are concerned with the mental health issues. Still, more research is required regarding this, but all the research available is
has proved that physical activity is a very good therapy to improve the for the treatment of this you can say for the management of depression and certain psychological disorders. So collaboration with the government and among sectors such as education, health and sports is necessary to increase physical activity among people with mental health conditions and those at risk of developing them. Adaptation of existing policies and creation of new strategies could increase the low level of physical activity among people with mental health conditions and complement cost effective strategies. So, to sum up, physical activity as a major health behavior strongly recommended for the prevention and treatment of several mental disorders. The behavior itself is multifaceted and may comprise less sitting, more light intensity activity, as well as traditional moderate to vigorous physical activity. The evidence concerning mental health effects is extensive but still growing. Associations are clear, but more needs to be known about clinical effectiveness for some population groups and conditions, as well as on the underlying causal mechanisms responsible for what ancient societies have always been aware of. That is, that movement is good for you, and sloth is associated with poor mental and physical health. With these words, I invite our speakers, today's eminent speakers, who will tell us in detail about the psychological immunity. So, thank you very much, Dr. Ruby. Thank you so much, Dr. Ajita, for such an in-depth insight on a mind-body relationship. I'm sure our students are definitely going to pick the points, especially in this lockdown condition, when physical activity is the most neglected kind of activity because of the virtue of the kind of lifestyle that we are having these days. Now, further, I would like to invite our first keynote speaker of the day, Dr. Pramila Batra. Professor Pramila Batra is been a professor of psychology and Dean Faculty of Social Sciences at MD University, Rohtak. Ma'am has had a teaching experience of more than 34 years, and her areas of specialization include health promotion through counseling intervention, environment and behavior, biochemical basis of memory. In fact, while I was going through ma'am's bio note, the points that I was getting amazed as I was reading was ma'am's active engagement in the research in relatively novel areas like air ions, Shank Pushpi and memory, temperature and memory, relaxation and health. Ma'am has been involved in various administrative committees as Dean Faculty of Social Sciences, Coordinator, Yan and Convener Coordination Committee, UCS MDU. Actively engaged in counseling, personal, emotional, and family, with an emphasis on designing community health interventions. Holding workshops for teaching skills of counseling, positive parenting, and managing stress at school and work, enhancing memory, learning of social skills like assertiveness, improving well-being, and raising self-esteem. Ma'am is currently involved in facilitation of the growth and independence of school-going girls in Shiksha Bharati School, Rohtak, by self-enhancement method to develop emotional self-defense. Apart from various other important activities that ma'am has been engaged in, ma'am is the active life member of various psychological associations, as well as she has been keenly interested in psychological community services. And with these words, I welcome Professor Pramila Batra and invite her to have a discourse with our students on psychological immunity, mental health for all. Welcome to you, ma'am, and over to you. Thank you so much, Ruby. I just want to know, is my screen visible to you people? Your screen is visible, ma'am. Right. All right. So I will like to begin.
First of all, I would like to express my gratitude to Madam Gill, Tara Singh ji, and Ghuman sir, who have really made to arrange such kind of an event. Of course, with in association with psychology. Then I would also like to wish Sangeeta ma'am, the speakers, Dr. Prabjot, Ajita ma'am, and Mamta ma'am is there. Sangeeta ma'am already is there. So it was nice listening to all of you. And you have already said many things about psychological immunity, particularly Mamta ma'am had been talking about, then exercise has already been talked about. The difference between the mental illness and mental wellness has already been made about. Yet I will try and make an effort to make you understand that what psychological immunity is and why is it required. This year, the theme, as said by Ruby, is about mental health for all, and that particularly in concern to COVID. But when I talk of the post-COVID-19 state, I have one question from all of you, my students who are sitting here, particularly from you people. I have a question that will the problems stop coming after COVID-19, or they will keep coming? If you can recall, since after the day you remember about your life, problems were there. I will shift to a mixed language because one of you have already requested to talk in Punjabi or Hindi. I think I will try to adopt the mixed language. So your first question which you need to ask is, कि समस्याएं तो आती रहेंगी, the problems are going to be always there. Then what is it that is required? No, if not this, then that is the other thing. And then Mamta ma'am had also said that not that every mentally healthy person doesn't have any kind of the mental health issue. So that means it is very clear that it is more important to learn to coping. And that's precisely what psychological immunity is going to tell us about. First, in my first slide, I want to talk about the meaning. Psychological immunity as such is not really a new all that is going to have an impact on our immune system. और वो immune system क्या है? ये वो immune system है जिसमें आपके T4, CD4, T8 वो सब cells जो हमको बीमारियों से बचने की बात करते हैं, वो सारे के सारे पाए जाते हैं. So immune system जो होता है वो सिर्फ biological नहीं होता. अब इस साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया ग्लेजर एंड ग्लेजर ने. ग्लेजर Janice was a psychologist, while Glazer Ronald was an immunologist. They all worked, both of them, they worked together. और इनको ये एनिमल्स की स्टडी से लगा कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस इज द कॉज ऑफ इन्फेक्शन. ये हाइपोथेसिस जब इन्होंने बनाया, उसको पहले एनिमल्स पर टेस्ट किया, फिर इन्होंने ह्यूमन बींग्स के ऊपर टेस्ट किया इन वन मेडिकल कॉलेज, और इन्होंने एक स्ट्रेसर लिया, एग्जामिनेशन स्ट्रेस, सिर्फ 3 दिन का, ओनली 3 days ऑफ एग्जामिनेशन स्ट्रेस of the test taker. और इनके अंदर इन्होंने सीधे यही स्टडी किया कि जो इम्यूनिटी बूस्टिंग एजेंट्स हैं, सेल्स हैं, वो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है. एंड देन दे फाउंड दैट दीज टेस्ट टेकर्स हैड फ्यूअर नेचुरल किलर सेल्स. अगर नेचुरल किलर सेल्स खत्म हो जाएंगे तो आवर कैपेसिटी टू फाइट द इन्फेक्शंस एंड द वायरल्स इज गोइंग टू रिड्यूस. वो हमारे पास होगी ही नहीं. Not only this, they also found that body had almost stopped releasing the immunity boosting gamma interferon. अब ये तो गड़बड़ है ना. अब हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा कि कुछ ना कुछ हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि जो चीजें हमको बचाती हैं, हमारी रक्षा करती हैं, टी सेल्स जैसी चीजें जो हैं, वही अगर हमारी खत्म होने लगेगी तो कैसे चलेगा. इसको फर्दर बढ़ाया 2004 में सेगरस्ट्रॉम ने. उसने एक मेटा एनालिसिस किया.
उस मेटा एनालिसिस में 300 लोग उसने लिए, और ये जो 300 लोग उसने लिए, इन लोगों में उसने ये पाया स्ट्रेस और हेल्थ में कि एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप उसको मिला, और चाहे कुछ दिन का स्ट्रेसर हो और चाहे वो कुछ महीनों का स्ट्रेसर हो, जैसे हमारी जिंदगी में होता है, बिल्कुल दोनों के अंदर द इम्यूनिटी वेंट डाउन है। इम्यूनिटी हमारी जो है वो रिड्यूस हो रही थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि लॉन्ग टर्म एंड क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो हमारे लिए और भी ज्यादा सीरियस इशू है। तो ये वो सिस्टम है साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी जो हमको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द डैमेज फ्रॉम द स्ट्रेस। व्हाट आई वांट टू से दैट स्ट्रेस इज आल्सो कॉजिंग यू ए डैमेज। उस डैमेज से हमें कौन बचाए? उस डैमेज से हमको सीधे सीधे साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी बचाएगी। इसमें आई डोंट नो ये लाइंस अचानक कहां से आने लगी हैं, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, हाउएवर इट इज विजिबल आई होप। सो ये जो सिस्टम है ये हमें हमारी पीस की तरफ ले जाता है, हमारे मन को शांति की तरफ ले जाता है अगर हम लोग अपनी साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी को बिल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं आपके, नेगेटिव इफेक्ट्स हैं आपके, जो कांस्टेंट वरी, नर्वस टेंशन, एंजाइटी या स्ट्रेस के कारण हमारी माइंड और बॉडी दोनों पर हो रहे हैं, उस नेगेटिव इंपैक्ट से बचाने के लिए हमको साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी चाहिए। स्ट्रेस तो रहेगा, बड़ी रहेगी, चिंताएं रहनी भी चाहिए। किसी एक बच्चे ने लिख रखा, आधे घंटे से हमारे को बिठा रखा है, हम स्ट्रेस फील करते हैं, पर पॉइंट ये है, कोई बात नहीं, दैट्स नॉट एन इशू कि हमें बुरा लग रहा है। बात ये है कि अगर मुझे वो खराब लग रही है बात, तो उसको मैं हैंडल कैसे करूं कि उसका मुझ पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना आए, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस करता क्या है? स्ट्रेस के कारण से हमारी बॉडी के ऊपर जो स्ट्रेन पड़ता है, हमारी माइंड के ऊपर जो स्ट्रेन पड़ता है, उसके कारण से सारी शारीरिक बीमारियां, फिजिकल हेल्थ हैजर्ड्स भी बढ़ जाती हैं। जैसे CHD का चांस, एथेरोस्क्लेरोसिस का चांस, अस्थमा, डायबिटीज, गैस्ट्रिक अल्सर्स, अदर hormonal and biochemical issues, and a lot many of the diseases can occur because of the stress. In America, आज 80% of the OPD is the stress OPD. Whereas अगर मैं बात करूं all over world की, तो 43% लोग जो हैं वो इस स्ट्रेस से सफर करते हैं। फिर हम बचे कैसे? पहले आप ये समझें कि केमिकली इसका इम्पैक्ट क्या होता है। जब हमारे स्ट्रेस होता है तो ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के ऊपर इस ढंग से एक्ट करता है कि ऑक्सीडेटिव एक्टिविटी खत्म हो जाती है, और ये जो ग्लूटाथायोन है ना, ये ग्लूटाथायोन जो है ये डिप्लीट कर जाता है। whereas this is our best friend, it is the best ally for us when we are in the stress. When we are in the stress, if we do not have glutathione, then we will not be able to work. It helps us handling all the stresses. जितने भी chemicals निकलते हैं, finally it is the glutathione, and direct relationship है कि stress के कारण से glutathione जो है वो reduce हो जाता है। इसलिए we have to see to it that how we are even our workload and even information workload। अभी हमारे एक रिसोर्स पर्सन ने मेंशन भी किया था, शायद दिल में हमने किया था, हम टेलीफोन पर सारा दिन बैठे रहते हैं, हमारा सिस्टम ही ऐसा है, हमको उसको भी रिस्पॉन्ड करना है, उसको भी रिस्पॉन्ड करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। यू आर हैविंग एन इंफॉर्मेशन ओवरलोड, एंड दिस इंफॉर्मेशन ओवरलोड इज गोइंग टू नॉट ओनली deplete your glutathione, rather it is also going to reduce all the nutrient objects and the chemicals which are required for all kinds of the cells. मतलब ये हुआ कि हम जो हमारी चाय पानी खाना है ना हमारे दिमाग के लिए और हमारी बॉडी के लिए, उसको भी हम अपने स्ट्रेस में डिप्लीट कर डालते हैं। इसलिए हमको साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी को बना करके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अन्यथा हमारे सेल्स की ग्रोथ जो है इट विल नेवर बी पॉसिबल। सो ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज जो है हमको मेकअप करनी पड़ेगी। That the cells in your body react to everything that your mind। आपने हंसी में भी खुद को कह दिया ना, मैं नहीं कर सकती, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये तो this is a negative statement, and this negativity is going to have an impact upon your mind and body, and the immune system is going to come down। इम्पैक्ट नहीं करेगा, केवल वो इम्पैक्ट क्या है? नेगेटिव है। इतनी भर बात से भी आपके उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो
आ जाता है। तो ये न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, ये ऑप्टिमम लेवल से भी बिलो आ जाते हैं, इस कारण से हमारी हेल्थ पुअर हो जाती है। लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स हैं क्या? वेरी इजी, वेरी सिंपल। दीज न्यूट्रिएंट्स डोंट हैव टू कम विद इन द बॉडी, वी कैन ब्रिंग देम फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। ये इसकी सबसे अच्छी और बड़ी बात है। हम यहाँ क्या कहना चाहते हैं आपको? ऑप्टिमिज्म क्रिएट कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग, ह्यूमर, रेजिलियंस, होप, ये सारे हमारे मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे न्यूट्रिएंट्स माने जाते हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्या होता है? ये हमारे को अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के कारण से हमें डिप्रेशन होती है और हमारी इम्यूनिटी लो होती है, या कि डिप्रेशन होती है तो उसके कारण इन्फ्लेमेशन होती है और फिर उसके कारण हमको CHD जैसी चीजें हो जाती हैं। सी दिस इज अ पिक्चर, यू जस्ट सी, यू विल फाइंड स्ट्रेस, immunity and disease, all the three things, they have a two-way interaction. So because of less time, I am not talking of all combinations, लेकिन इस डायग्राम को देख के सिर्फ एक बात समझिए कि स्ट्रेस जो है वो आपकी इम्यूनिटी को भी घटा रहा है और स्ट्रेस आपकी डिजीज को, आपके अंदर डिजीज को भी पैदा कर रहा है। ये किसी भी तरह की डिजीज हो सकती है, बट एनीवेज इट इज कॉजिंग अ पुअर हेल्थ टू अस। सो हाउ डज इट रियली मैटर कि स्ट्रेस ने पहले डिजीज करी या पहले इम्यूनिटी करी? पॉइंट ये है, इम्यूनिटी लो हुई तो भी डिजीज होगा, और अगर डिजीज हो गई तो इम्यूनिटी हमको हाई चाहिए ही चाहिए, और स्ट्रेस उसको लो कर ही रहा है। फिर हमारे पास तो मतलब ये दाएं से चलिए, बाएं से चलिए, ऊपर से चलिए, नीचे से चलिए, ये इंटरैक्शन प्रोसेस ऐसा है कि वी हैव टू लर्न टू डेवलप साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी so that we can save ourselves, we can protect ourselves, we can preserve ourselves. I mean both, myself, I mean both the mind and the body from the impacts of the stress, because हम stresses को लाइफ में खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि हम सबके इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। सेम चीज किसी को अच्छी लगती है, किसी को खराब लगती है, किसी चीज की कैपेसिटी आप में है, किसी चीज की मुझ में है। एक चीज जो मेरे लिए स्ट्रेस है हो सकता है आपके लिए स्ट्रेस ना हो, एक और चीज जो आपके लिए स्ट्रेस नहीं है हो सकता है वाइस वर्सा। सो एवरीबडी हैज हिज और हर ओन, स्ट्रेस इज हाईली सब्जेक्टिव। इसलिए हम क्या ऐसा करें कि कुछ हम अपने इस इम्यूनिटी को जो है किसी तरीके से बूस्ट कर पाए, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैं स्टडीज को अब डिटेल में नहीं बताऊंगी, सिर्फ इतना बताऊंगी कि ऐसी स्टडीज हुई हैं जिसमें ये निकल करके आया है कि जैसे रैट्स के ऊपर हुआ काम कि चलो ये तो पता है कि डिवोर्स जैसी चीजें, बिरीवमेंट जैसी चीजें, ओवरलोड जैसी चीजें, इन सब से तो हमारी इम्यूनिटी लो होती ही होती है। सारे बायोमार्कर्स जो है वो खत्म हो जाते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं। ऐसी स्टडीज भी हैं, ऑल्दो कम है, कि यदि हमने पॉजिटिव वेलबीइंग कर दी तो उसके कारण से जितने भी स्ट्रेस के बायोमार्कर्स हैं वो सारे के सारे कम हो जाती हैं और इम्यूनिटी बढ़ जाती है। माइस को दो तरीके से, एक स्टडी बताऊंगी, 3 की रेफरेंस है, आप लोग भी मैम से ले सकते हैं। इसमें 2 ग्रुप्स इन्होंने लिए, एक को एनवायरमेंटल एनरिचमेंट दिया और एक ग्रुप को इन्होंने दे दिया पॉजिटिव मसाज स्ट्रोक्स दे दिए, ताकि पॉजिटिव इमोशनल कंडीशंस जो है वो क्रिएट करी जा सके। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि जिनको मसाज स्ट्रोक मिला उनके अंदर देयर वाज एन इंक्रीज, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द टी सेल्स जो कि सर्कुलेशन में आ गए, यानी कि इम्यूनो रेजिलियंस ऑफ द पर्सन बढ़ गई। प्लीज नोट करिए इस वर्ड को, इम्यूनो रेजिलियंस ऑफ द persons can be increased. It was on rats of course. Then environmental enrichment जब करी तब तो कितनी चीजें बढ़ गई, तब तो इन्होंने पाया कि CD4 T cells जो हैं वो भी बेटर हो गए, and then higher levels of IL-10, IL-17, ये सारी चीजें जो है वो पाई। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये स्ट्रेस के साथ इनका इतना डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और अगर हम किसी तरीके से अपने अंदर पॉजिटिव मेंटल स्टेट्स को क्रिएट कर लें, कैसे भी कर लें, अगर हम कर लें तो उसका एडवांटेज हमें ये हो जाएगा कि भाई हम जो है वो ये जो सारी समस्याओं से जो हम जूझते हैं, इतनी सारी बीमारियों से जो हम जूझते हैं, उन सब बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। So what I want to tell you is that psychological immunity is not only a protection against the mental illness,
it is a clearly established fact that it is a protection against the bodily mechanisms as well as all kinds of diseases too. होता क्या है, ठीक है, हम मानते हैं कि जेनेटिकली बहुत सारी चीजों को हम नहीं बदल सकते, लेकिन प्लास्टिसिटी नाम की एक चीज आपने सुनी है ना, अभी मैं इमोशनल रेगुलेशन पर भी आऊंगी, पर यहाँ बताना चाहती हूँ बिफोर द इंटरवेंशन कि प्लास्टिसिटी जो है, अभी मैम ने बोला था, रूबी मैम हैड मेड अ रेफरेंस टू दैट वी कैन लर्न, वी कैन अनलर्न द थिंग्स. सो what can happen with us is कि अगर हम अपने आप को इमोशनली रेगुलेट करना सीख लें तो उसके सारे पॉजिटिव बेनिफिट्स जो हैं वो हम उठा सकते हैं. वो लोग जो कहते हैं, साइकोलॉजी में भी देयर इज अ ग्रुप जो ये कहा करते हैं कि पर्सनालिटी कभी भी चेंज नहीं होती होगी, कोई बात नहीं, बट द पॉइंट इज that I can change my habits, I can change my behavior, and I've already proven this to you कि आपके व्यवहार से आपका इमोशन रेगुलेट होता है और आपका इमोशन आपकी इम्यूनिटी को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है. Therefore, it becomes necessary to learn to boost the psychological immunity. ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा है. इस स्लाइड पे मैं बहुत सारा टाइम नहीं लगाऊंगी क्योंकि 12 ऑलरेडी हो चुकी है, 12-15 तक का मेरे पास टाइम है, सो आई विल नॉट बी एबल टू गेट इनटू हाउ टू डू इट. लेकिन एक मॉड्यूल मैं आप लोगों को जरूर देना चाहती हूँ कि साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स, वैल्यूज, virtues, life skills. This is another full-fledged topic. Yesterday I had a lecture on this and I कि अगर हम कुछ अच्छे वर्चूज अपने अंदर पैदा कर लें तो हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव कर जाती है. पॉजिटिव थिंकिंग, सोशल कनेक्शंस, इमोशनल रेगुलेशंस, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग का लर्निंग, रेजिलियंस, अभी प्रभजोत मैम इस पर बात करेंगी. समरली अगर हम लोग we learn how to cope with stress in healthy ways. How to cope with stress in healthy ways is the most important thing which we have to really learn instead of substance abuse or instead of taking the negative coping styles or avoidance kind of the style. So this is what we have to learn. इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमको पॉजिटिव थिंकिंग सीखनी है. मेरे से लोग ये सवाल पूछते हैं जब मेरे क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि कैन आई be a positive thinker? Yes, you all can be a positive thinker provided आप कंफर्ट जोन में से निकल कर बाहर आ जाइए. अभी बड़ी अच्छे से बताया गया है आपको. एक्सेप्ट योरसेल्फ, अपने आप को स्वीकार कीजिए. हम अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना नहीं चाहते. द मोमेंट यू एक्सेप्ट, yes I ruminate, yes I tend to miss the positive events in my life, जिस दिन आप इस चीज को स्वीकार कर लेंगे तब आपके आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे, अन्यथा वो कभी भी नहीं. फ्रेडरिक्सन का इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम है. वो कहती है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव थॉट्स. अब इस बात को समझिए, यहाँ पर मैं एक मिनट लगाऊंगी. मेरा एक क्लाइंट था, he had a problem with his wife. His wife was not good looking. वो जब अपनी बीवी को देखने के लिए गया तो उसको उसकी बहन ज्यादा पसंद आ गई क्योंकि वो बहुत खूबसूरत. लेकिन somehow पेरेंट्स ने बात नहीं मानी और शादी जो है वो बड़ी वाली लड़की के साथ में उनकी हो गई. अब बच्चे भी हो गए वो कहने को. But when he came to me and he tells me कि मैम मेरे को ना अब almost 10 years हो गए हैं, बस बच्चों के कारण मैं घर को जाता हूँ पर मैं बड़ी सीरियस डिप्रेशन, मन नहीं करता है कि मैं थेरेपी मैंने जब की तो मैंने क्या नया स्टैंड के लिए नए थॉट्स, आई गाइडेड हिम. और वो नए थॉट्स क्या थे? When he told me about his relationship with his wife, मैंने उसको सिर्फ एम्पैथी सिखाई और मैंने उसको सिर्फ इतना पूछा कि ये बताओ कि जब तुम जाते हो और अपनी बीवी के साथ ऐसा व्यवहार कर, he had all praises for her, तो उसे कैसा महसूस होता होगा. And then that boy thought, वास्तव में मैं तो इसके साथ इतना खराब व्यवहार करता हूँ लेकिन फिर भी शी सो गुड. ये मेरी माँ का इतना ध्यान रखती है, मेरे बच्चों का इतना ध्यान रखती है, मेरी भी सारी नीड्स को फुलफिल करती है, मैं ही सिर्फ इनजस्टिस कर रहा हूँ. सो ही कुड क्रिएट हिज थॉट. What I want to explain this to you is the major thing. I just want to tell you कि ये चीजें औरों के हाथों में नहीं है, ये चीज हमारे हाथ में है कि हम कैसा सोचते हैं. It is just a perspective मेरे बच्चों.
And if you want, the day you decide, the day you take this decision, you also can create your thoughts, and then you can transform such kind of the negative energies into the positive energies. ये एक mental attitude है, ये hopeful mind को create करती है. अगर आप ये सोचते हो कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, मेरा इम्तिहान बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, मैं तो फेल कर जाऊंगी या फेल कर जाऊंगा, तो आपके अंदर होप नहीं है. जब होप नहीं है तो वहां आपकी थिंकिंग के आगे एक रोड ब्लॉक लग जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू थिंक अबाउट दैट. जब तक हम ये नहीं सोचते हाँ मैं ये कर सकती हूँ, सोचूं कैसे कर सकती हूँ, सोचना तो आएगा ही नहीं. द मोमेंट यू से कि आई कैन नॉट डू इट, या मेरी जिंदगी में ये है ही नहीं, देखो वो कितनी किस्मत वाली है, उसके पास ये भी है, उसके पास वो भी है, देखो उसके पेरेंट्स कितने अच्छे हैं, है ना. जब तक आप ऐसा सोचते रहोगे तब तक आप ये थोड़ी ना सोचोगे कि आप भी अपने पेरेंट्स को अच्छा बना सकते हो या आप खुद भी थोड़े से अच्छे बन सकते हो और एनीथिंग ऑफ दैट काइंड. सो फ्रेडरिक्सन ने बिल्ड एंड ब्रॉडन का थ्योरी दिया. शी सेज कि जब तुमको होप आ जाती है केवल तभी तुम वेरियस ऑप्शंस के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि तुम्हारे माइंड के जो होराइजन्स हैं वो ब्रॉडन होंगे. once they are broadened, then only you will think of the options. When you think of the options, then you will weigh them also. नए नए ऑप्शंस भी तुम्हारे दिमाग में आएंगे. एंजाइटी में पड़े रहेंगे तो कभी कोई ऑप्शन ही दिमाग में नहीं आ सकता है. क्यों? क्योंकि सारे सब्सटेंसेस ने हमको कंप्लीटली लो इम्यूनिटी के फेज में लाकर रखा है और हम तो डिप्रेशन में ही रहेंगे, हम विड्रॉन रहेंगे, हम कोई एफर्ट अच्छे से कर ही नहीं सकते. ये साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी का रोल है जो हम पैदा कर सकते हैं अपने अंदर बाय डेवलपिंग अ पॉजिटिव थिंकिंग. इसके अंदर ऑप्टिमिज्म, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, ये सब चीजें आती हैं. जब हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है हम कंप्लेंट नहीं करते, हम ऑप्शंस की तरफ ढूंढते हैं. इसलिए सबसे पहले आपको अपने बारे में एक पॉजिटिव व्यू डेवलप करना पड़ेगा. इफ यू वांट टू डेवलप द साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट यू दैट यस आई कैन डू इट. थोड़ी मेहनत ही तो और करनी है ना. अच्छा कर लूंगा, कोई बात नहीं यार, 2 घंटे की जगह 4 घंटे जाग लूंगा यार, कोई बात नहीं मैं 8 घंटे काम कर लूंगा. अच्छा किसी से पूछ लूंगा, ओ मैडम चिड़ी तो जाएगी, 4 बार ही पूछूंगा, मैडम चिड़ी तो जाएगी, क्या हो गया, मैं कर सकता हूँ लेकिन मुझे गाइडेंस मैडम से ले लूंगी. सो ये सब जो है ना, ये पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं. अपने बारे में आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस बनानी है, फिर अपने बारे में पॉजिटिव सोच के पॉजिटिव पर्सपेक्टिव पैदा करना है. मम्मी तो चाहती नहीं कि मैं ये करूं, है ना, और कोई मुझे करने नहीं देगा. सो व्हाट आर यू डूइंग कि पर हालात ही मेरे ऐसे. व्हाट आर यू डूइंग? यू आर ब्लेमिंग अदर्स, समथिंग which is not within you, but whom can you control? किसको कंट्रोल कर सकते हो मेरे बच्चों? खुद को कर सकते हो या सारी दुनिया को कर सकते हो? सिंपल सा आंसर है, आप खुद को ही कंट्रोल कर पाओगे ना, औरों के ऊपर तो आपका कमांड नहीं होता है. सो देयरफॉर व्हाट यू कैन डू इज यू नीड टू डेवलप एन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल. मैं आई कैन डू इट. भाग्यवादी मत बनिए, ये सब आपने पढ़ा है. अपनी डेस्टिनी को खुद कंट्रोल करना सीखिए. मैं बारी बारी एक उदाहरण देती हूँ. 2 बच्चे हैं, एक का IQ 110 है, एक का IQ 130 है. यदि 110 IQ वाला बच्चा रिलेटिवली 8 घंटे की जगह रोजाना 10 घंटे पढ़े तो क्या वो 130 IQ वाले बच्चे के बराबर परफॉर्मेंस शो कर सकता है कि नहीं कर सकता? हाँ कर सकता है. Is the answer. I have many examples of this kind. So that's how we can go ahead. इसलिए आपको इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पैदा करना पड़ेगा. अपनी जिंदगी को खुद गवर्न करिए. रोबोट मत बनिए. अपने नाक की नकेल दूसरों के हाथ में मत दो. पायलट बनो. अपनी जिंदगी के फैसले खुद करो, अपनी योग्यता के अनुसार करो. अगर एक योग्यता में कमी लगती है तो दूसरी कौन सी योग्यता हो सकती है वो पैदा करो. पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो पैदा करो. अपने माँ बाप को हमेशा रोड़ा मत समझो. अपने टीचर्स को, सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को हर समय गालियां देने से कुछ भी नहीं होगा. जो पॉजिटिव कर सकते हो उसको करो so that you can keep happy. So active listening I am not doing. My last slide for the day is emotional regulation. मैंने पहले भी कहा था प्लास्टिसिटी की बात. देखिए इफेक्टिव इम्यूनोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया है. ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है. यहाँ पर ये कहा जाता है कि केवल आपके इमोशंस और आपके व्यवहार से भी आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस लाए जा सकते हैं. When I was talking of positive thinking, let me tell you, पॉजिटिव थिंकिंग से सारे जो चारों हैप्पीनेस के हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं. ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा, दैट लव. सेरोटोनिन रिलीज होगा,
लो सेरोटोनिन इज द डिप्रेशन का डिजीज, एंडोर्फिन्स जो है वो भी रिलीज होंगे, आपको पेन्स भी कम महसूस होंगी, हैप्पीनेस भी आपके अंदर ज्यादा रहेगी। कैटेकोलामीन्स एंड कॉर्टिजोल जो स्ट्रेस हार्मोन्स है वो रिड्यूस भी हो जाएंगे। तो सारा कुछ ही तो एक साथ हो रहा है पॉजिटिव थिंकिंग से। सो व्हाई शुड वी डू दैट? पहले पॉजिटिव थिंकिंग करो, अपने ऊपर विश्वास करो, अब आपके अंदर कैपेसिटी आ जाएगी कि आप अपनी इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको ये ज्ञान है कि यदि आप अपने व्यवहार और अपने इमोशन को कंट्रोल कर लो तो आप इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हो, साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी को, उससे आप मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ रिजल्ट से बढ़ सकते हो। आई एम श्योर यू आर कन्विंस्ड कि इसे हमें करना चाहिए। इसके तरीके प्रत्याहार, प्रिवेंटिंग योरसेल्फ अगेंस्ट द एक्सेसेस, जैसे मैंने अभी टीवी का एग्जांपल दिया, एक्सेस ईटिंग, बड़ी जल्दी चिड़चिड़ होना, हद से ज्यादा टीवी देखना वगैरह वगैरह। रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन आर वंडरफुल। मैंने तो खुद किया हुआ है इस तरह का काम। मैंने रिलैक्सेशन से कैंसर के पेशेंट्स के ऊपर हुए देखा है। तो ये एक डायग्राम है जो है कि यदि आपका इमोशन है तो इन दैट केस आप एक अच्छा जीवन जो है वो जी सकते। गुस्सा मत करें, लोनलीनेस ना दिखाएं, एंगर को रिड्यूस करें, और इस तरीके से यू कैन लिव and you can let others live. My dear students, my last message to you is don't create complications. Life is really simple. हम उसे complicate करते हैं. So live and let others live. And with that, I really thank you so much for listening to me. Thank you for being bright listeners. And I'm really blessed that I have been given an opportunity. So once again, I'm grateful to all of you, those who were hearing, those who were listening, and those who gave me an opportunity. Wishing you all a very, very happy mental health. Keep smiling always. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. We are grateful to you for throwing light on the cognitive and the intricate aspects of psychological immunity and the various dynamics of a happy and a healthy life. I'm sure if the students imbibe even half of it in their lives, in their cognitions, in their covert as well as overt behavior, I'm sure the life is going to take a 360-degree change. And of course, it is going to change for better. Thank you so much, ma'am. Thanks a lot. I'm sorry, मैंने 2-2.5 मिनट फिर भी देर कर ही दी। आपने मुझे 25 मिनट अलाउ किया था। मैम पता ही नहीं चला। पता नहीं चला मैम। Thank you so much. Now I would like to invite Professor Dr. Sangeeta Trama, Senior Most Professor at the Department of Psychology, Punjabi University, Patiala. Ma'am has very kindly agreed to have a brief interaction with our students on this important day. And ma'am is going to interact with our students on developing psychological immunity. Over to you, ma'am. Dr. Sangeeta Trama. Thank you, Dr. Ruby Gupta. First of all, I would like to pinpoint that I cannot share the screen. I think you have to give a command from there. So kindly allow me to share the screen, or you can display it. I'll do that, ma'am. Yes, I'll do yes, that. Yes. So at the outset, under the patronage of our worthy Vice Chancellor, Dean Students Welfare and Additional Dean Students Welfare, Professor Paramjit Kaur Gill, along with our counselor, Dr. Ruby Gupta, who have taken this initiative of organizing this webinar on World Mental Health Day. So I congratulate them for having selected such a beautiful topic for discussion today. Now, I shall be dealing with the topic of developing psychological immunity. The 20th year of the 21st century has hit all mankind with a powerful force. The force of COVID-19, a force that has the power to test, challenge, shake, and transform oneself and the world around in more ways than one could ever imagine. This pandemic has heightened uncertainty in economy, employment, finances, relationships, education, and of course, our physical and mental health. On this occasion of World Mental Health Day, developing psychological immunity has become increasingly important for administrators, educators, policymakers,
parents, as well as students who are facing various dilemmas and stress in the present times. Now, let us first of all discuss what do you mean by psychological immune system. I shall be very brief since it has been touched upon by Professor Batra. It can be defined as an integrated system of cognitive, motivational, and behavioral personality dimensions that should provide immunity against stress, promote healthy development, and serve as stress resistance resources or psychological antibodies, as we may call them. Our response to stress not only depends on our physiological immune system, but also our psychological immune system. This is very, very important for all the young students who are sitting in front of us today, listening to us, that your response to stress is not merely a physiological response, but it is also a psychological one. Misfortune will strike, be it setback in relationships, in the home atmosphere, at the workplace, in health, combined with the wrath of natural calamities such as tsunami or floods evidence in Uttarakhand, or now what we have as the corona pandemic, with virus being everywhere, in every city and town, in every urban and rural area, in open as well as closed space. Gilbert and social psychologist Timothy Wilson of University of Virginia suggest that people forget, please note, we forget what they call a psychological immune system which shelters them from the worst effects of their misfortune. So this is very important for all the young students who are sitting here to note that we forget that we are possessing such a psychological immune system. Now let us see how do we develop psychological immunity. Now, first of all, for all the youngsters sitting over here online, be optimistic. Don't give up on hope. Because, once we are facing stress, you feel you have succumbed to stress. That's not the necessity. You have to see hope. You have to see the brightest side of the things and develop self-control. Dr. Batra just spoke about internal control and external control. Over here, I would like to add that sometimes we have an unknown source of control also. I don't know why I got so many marks. I don't know why my health has been. Now, many of us have this kind of tendency, especially the students, who say, गुड मॉर्निंग एक मिनट मैम मैं ना वो चल रहा ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਂਜੀ know how the things are taking place. So we have to have an adequate controlling understanding that what is it which leads to the outcome. Then developing of coherence is equally important. That is harmony between thinking, feeling, and actions. Over here again, I would like to be using different languages. जैसे कि मुझे कहा गया है कि बच्चे कुछ हिंदी और अंग्रेजी के भी हैं और पंजाबी मीडियम के भी हैं. अगर हमारे थॉट्स में, हमारे इमोशंस में और हमारे एक्शंस में हार्मनी नहीं होगी, तो उससे क्या होगा? देयर विल बी इनकोहेरेंस. अगर आपका मन कुछ कह रहा है, आपके थॉट्स कुछ कह रहे हैं, आप फीलिंग्स कुछ और एक्सप्रेस कर रहे हो, या फीलिंग्स कुछ और है और बिहेवियर कुछ और एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको जरूर खलेगा एंड इट इज गोइंग टू लीड टू स्ट्रेस. सो यू हैव टू डेवलप कोहेरेंस. Then you have to develop insight. Over here, a lot of work is being done by the Office of the Dean Students Welfare, where counseling is being provided to students. So psychological testing and probing can really do wonders. One must realize one's weaknesses as well as strengths. Over here, I would like to pinpoint that one of the latest approaches in psychology is building strengths. Peterson and other psychologists really emphasize this approach. हम लोग दूसरे के नेगेटिव पॉइंट्स, उसके शॉर्टकमिंग्स, उसके वीकनेसेस को हमेशा हाईलाइट करने में लगे होते हैं, या कई बारी हम अपनी वीकनेसेस के ऊपर ही ध्यान दे रहे होते हैं. हम अपनी स्ट्रेंथ्स को भूल जाते हैं या दूसरों की स्ट्रेंथ्स को भूल जाते हैं. तो यहाँ पे ये बहुत चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो ये हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, इनसे हम बड़ी मुश्किल का हम हल ढूंढ सकते हैं. So we have to learn to build on the strengths. These can help in the pitfalls of life. Also of equal importance is impulsivity control.
अक्सर हम लोग एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं. वी आर वेरी इम्पल्सिव इन आवर रिएक्शंस. खुशी मिली तो एक्साइटेबिलिटी हो गई, कमी मिली तो भी उसको आपने बहुत ज्यादा उसको डोज में ले लिया, इंटेंसिटी में ले लिया. So what is the need of the hour is adequate emotional control, and as Dr. Batra was emphasizing, proper emotion regulation. So it is not only the control over emotions, but even the regulation of emotions. And when we talk of emotion regulation, two things come to our mind: suppression and reappraisal. क्या मैं अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को वहां तो नहीं सप्रेस कर रही जहां मुझे एक्सप्रेस करने चाहिए थे? अगर मुझे वहां एक्सप्रेस करना चाहिए था और मैं सप्रेस कर रही हूँ, तो मैं ये जो सारी बात है वो तो मैं अपने दिल में ही लेके जा रही हूँ या दिल में ही रखूंगी, घर में बैठ के उसको सोचती रहूंगी, वर्क प्लेस में बैठ के सोचती रहूंगी, तो एंड में स्ट्रेस या इम्यून सिस्टम किसका वीकन होगा? मेरा वीकन होगा. तो हमें ये देखना है कि कहाँ पे किसी चीज को सप्रेस करना है, वहां पे सप्रेस कीजिए. जहाँ एक्सप्रेशन है वहां एक्सप्रेस कीजिए. मोर देन दैट, what about reappraisal of the situation? कई बार हम सोचते हैं नहीं थी ऐसा हुआ, हम अपने आप ही ifs and buts करके सिचुएशन को क्रिएट कर लेते हैं. तो सिचुएशन को रीअप्रेस करो, ट्राई टू असेस इट अगेन कि ये चीज हुई तो क्यों हुई एंड इसमें कौन चीजें जिम्मेवार है. सो बाय रीअप्रेजिंग what is happening, I am regulating my emotions. I am not going to become irritable. I'm not going to become anxiety ridden. I'm not going to become angry. I will try to reappraise the whole situation, which will definitely have an impact on my immunity. We have to do away with passive coping. जी हो जाएगा, आपे हो जाएगा. पंजाबी बच्चे अक्सर कहते हैं आपे हो जाएगा. आपे कोई चीज आप किस तरह होएगी? या ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ एग्जाम आ रहे ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ, ਕਿਉਂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ. So these are unhealthy ways of coping. You have to encourage active problem coping. Don't target people. उसने मुझे ये कहा, you target the problem. कि प्रॉब्लम क्या है? हम अक्सर अपने रोज के इंटरेक्शंस में लोगों को टारगेट करना शुरू कर देते हैं, प्रॉब्लम को छोड़. तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा यही निवेदन है कि प्लीज अपनी इस अप्रोच को बदलिए. टारगेट द प्रॉब्लम, नॉट द पर्सन, एंड बिकम मेंटली इम्यून टू सिचुएशंस. डोंट थिंक सिचुएशंस आर अनकंट्रोलेबल एंड कितना भी स्ट्रेस क्यों ना हो, आप ये सोचिए आई एम मेंटली स्ट्रांग and you will definitely come out of it. Over here in this process, your self-respect is very important. Many times what happens when we are facing stress, when we are facing some setbacks in life, it gives a very big blow to our sense of self-esteem. So over here, the next slide please. Over here, the person's sense of self-respect is very important. Respect yourself. Have adequate sense of self-efficacy. Only then you can combat with stressors. If you think you can combat with stressors without having adequate sense of self, it is just not possible. We have to have personal resource mobilization. We have to strengthen our right beliefs. हम बहुत जल्दी दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं. जरा चार बंदे हमें कोई बात नहीं कहेंगे, हमें लगता है वही सच है. पहले तो you should be very sure about what is your conviction, and then you strengthen those convictions. You select the right kind of activities. Sometimes we are into all mundane activities. We are spending time into mundane activities, and later on we say, "नहीं जी stress हो गया." So you have to select the right kind of activities. Generate creativity. Sometimes you can't find a solution to the problem. Find alternate plans. Restructure your thinking. And I'm sure there will be a solution to the problem. Over here, your social resource mobilization is very, very important. You have to develop empathy. You have to develop a sense of connectedness with others. Collaborate. You build up a team. One person is always alone and two is always company. So even if you have one good person around you, build up a team. And you just see the kind of effect it is going to have in your over here. Equally important is the ability to persist.
You have to go on. You don't have to give up. My humble request to the audience, please switch off the mic. Please switch off your mics. You have to go on. That is really important. Because what happens when you are swayed by these stressors or the life circumstances, a person generally tends to give up. Don't give up. I mean, whatever be the problem, keep one thing in mind. It is not the end of the world. So keep that thing in mind. You have to go on. Over here, being mindful, being present is equally important, because sometimes we are just swayed by our emotions. So we have to see whatever is going in our mind. We become a third party observer to that. Without being judgmental, see what am I feeling? And suddenly I will request all the students who are sitting here to go home and do this exercise, which we do in school, in our classes of positive psychology. I ask my students, take out 5 minutes every day and you just sit and think, what are you thinking? And suddenly they realize कि मैम हम जो सोच रहे होते हैं वो यही होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ वैसा क्यों हो गया, मुझे इसने ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे उसने ऐसे घूर के क्यों देखा, मुझे उसने ऐसे गलत क्यों बिहेव किया. तो क्या है, हम ना चाहते हुए भी रियलाइज नहीं करते कि हमारे माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर ऑलवेज नेगेटिव. Now, the moment we train our minds to become mindful, you are going to very soon replace these negative thoughts by neutral thoughts. And later on, you can even replace them by positive thoughts. Now, it is all a kind of a conditioning, and you have to learn to condition your mind. Your mind is in your own hands. जो मैडम कह रहे थे ना, बत्रा मैम, अपनी जो आपने अपना जो लगाम है वो दूसरे के हाथ में नहीं देना. तो वो बहुत सही कह रहे हैं. आपका माइंड आपके हाथ में है, वो दूसरे इंसान के हाथ में नहीं है. दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है, हम अक्सर चीजों के साथ, सिचुएशंस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं. हमें देखना है क्या हमारा जो नजरिया था या जिस भी सिचुएशन में थे वहां हमने रिएक्ट किया कि रिस्पॉन्ड किया. दोनों में बहुत फर्क है. एंड में क्या होता है कि वी आर फीलिंग सो टायर्ड आफ्टर अ लॉन्ग डे एंड वी डोंट रियलाइज वी वर रिएक्टिंग. अब इम्यून सिस्टम किसका अफेक्ट हुआ? हमारा. Even from the other department, she was talking of nutrition. So I'm not going to spend too much time on the body relationships, as Dr. Ajita, Professor Sports Sciences, has already talked of. What kind of diet, what kind of nutrition, exercise, are we taking care of ourselves? Over here, I would like to especially raise the issue. Most of us, especially the working women, हम लोग फैमिली की केयर कर लेते हैं, पेरेंट्स की कर लेते हैं, इन लॉज की कर लेते हैं, सबकी कर लेते हैं, बट अक्सर हम लोग ये भी फाइंड आउट कि पूरे दिन में हमें अपने लिए टाइम नहीं मिला. सो यहाँ पे बाय इग्नोरिंग आवरसेल्व्स, लेट मी टेल यू, इफ आवर हेल्थ टेक्स अ सेटबैक, it will be a major setback for the family. So learn to take out time for yourself, to focus on your own diet, your own nutrition, your own exercise, because they are very beautiful mechanisms to, fight stress. Then place restrictions on yourself. You're spending time in which kind of activities? अगर आप पूरा दिन गॉसिप कर रहे हो, बैठ के चाय पी रहे हो, इधर की उधर की बातें लगे हुए हो, तो आप मुझे बताओ एंड में आपके दिमाग में यही सब कुछ चलेगा ना? तो उसका नतीजा क्या होगा? इट विल बी ऑल नेगेटिविटी. So you have to place restrictions on yourself. If you love music, listen to music. Music is a beautiful stress buster. Cortisol levels अपने आप कम हो जाते हैं म्यूजिक सुनने से. तो अपने लिए वो समय निकालें जिससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है. यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमें आदत डालनी है सेल्फ सूद करने की. हमें कोई बाहर से आके इंसान सूदन नहीं करेगा. डोंट थिंक. आजकल किसी के पास टाइम नहीं है कि आपको आके सूद करे. व्हेन यू आर फेसिंग स्ट्रेस, व्हेन यू आर फेसिंग नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, यू आर इन डिस्ट्रेस, you have to learn to self-soothe yourself. And over here, meditation is going to play a very important role. Chanting of various mantras like Om.
अब ये मैं नहीं कह रही, ये अब वेस्टर्न स्टडीज कह रही हैं कि ओम चांट करने से कितने कॉग्निटिव, अफेक्टिव और बिहेवियरल उसके इफेक्ट्स हैं. तो दोज चिल्ड्रन हु आर इंटरेस्टेड दे कैन गेट बैक टू मी. तो अब ये वेस्ट वाले कह कि ओम चांट करने का इतना असर बॉडी के ऊपर होता है. ओम हो, ओमकार हो, जो मर्जी हो, the moment you are sitting and meditating, it helps you in relaxation. So that is really, really important. So we have to learn to make the best of the worst situations. This is really imperative. We have to minimize negativity. We are always surrounded by negativity around us. Kabhi virus, kabhi ye, kabhi infections, kabhi reports, kabhi social distancing. पहले हक करके सबको मिलते थे, अब कोई पास आता है तो हम दूर हो जाते हैं. So you have to see to it. There's lots of negativity around us. We have to maximize positivity, either having to people around you or build up on things that bring joy. Now, a study was done by Fredrickson. She showed that 4 times number of positive emotions are required to undo the negative effect of one negative emotion. अब ये हमारी जो सोशल साइंसेस की स्टडीज हैं, जो कि पॉजिटिव साइकोलॉजी में हो रही है, वो स्टडीज एम्पिरिकली, साइंटिफिकली शो कर रही हैं कि अगर हमारे पास एक भी नेगेटिव इमोशन हमारे मन में आता है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट इतनी देर तक हमारे में रहता है कि 4 टाइम्स अगर उसके हम पॉजिटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करें, फील करें, तब जाके वो मुश्किल से अनडू हो सकता है. तो आप ये सोचिए कि हम किस तरह के इमोशंस अपने में लेके फिर रहे हैं. वो बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि there is a very important, very strong link between negative emotions and poor health. तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा. एक चीज और भी है कि जब हम किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं या फिर जो बच्चे इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, we often find people who are distracting us. अक्सर हमें क्रिटिसाइज करने वाले लोग मिल जाते हैं, अक्सर हमें नेगेटिव फोर्सेस मिल जाती हैं. एंड अगर मैं प्रोफेशनल लोगों की बात करूं, आई एम श्योर मेरे साथ बहुत सारे प्रोफेशनल लोग यहाँ जुड़े हुए हैं. देयर इज अ वेरी ब्यूटिफुल लॉ. ये लॉ ये कहता है द हायर यू गो अप द लैडर इन योर प्रोफेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीपल हु आर देयर टू पुल यू डाउन द लैडर. तो इस चीज का हमने बहुत बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जेलिसीज, इस तरह के ईर्ष्या, द्वेष, ये लोगों में होता ही होता है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फैकल्टी मेंबर्स हैं, चाहे वो लेडीज घर पे हैं, दे आर फेसिंग दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. तो हमने इस तरह की नेगेटिव फोर्सेस, चाहे वो घर पे हैं, नेबरहुड में हैं, हमने उनके ऐसे छोटे छोटे जो हरकतें हैं, न्यूएंसेस, उनके जेस्चर्स, उनके वाइब्स, उनकी मेमोरीज, हमने उनको सिर्फ पकड़ के, जैसे हम कंप्यूटर में हमारे पास रिसाइकल बिन होता है ना, जस्ट पुट ऑल दीज थिंग्स इन योर रिसाइकल बिन एंड गिव ओनली वन कमांड, delete forever. That is all I have to say. Put that command, delete forever, and don't let those things trouble you again and again. Again, at the end, I would also like to highlight that what is the ultimate goal of our life. Our ultimate goal of life is enlightenment. So we are training our students to become good scientists and researchers. But are we training our students to become good human beings? This is a very, very important question. The need of the hour is to bring a change in the thrust of education and inculcate spiritual orientation in young minds. For it is only when you tread the spiritual path, good deeds, selflessly, निष्काम भाव से आप अच्छे कर्म करते जा रहे हो. You stay away from vices, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन चीजों से आप अपने आप को दूर रखते हो. मैंने अहंकार नहीं करना, मैंने लोभ नहीं करना, मैंने क्रोध नहीं करना. और आप अपने जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका फर्ज है, आप अपनी फर्जदा पे खड़े हो. You are doing your duty religiously. It is only then that a person can move towards transcendence. Thank you. Thank you for a very patient here. Listen.
Thank you so much, ma'am, for the wonderful discourse. And I'm sure it has enlightened our students immensely. The practical aspects of a happy life, of a life which is free from any kinds of vices and biases too at the same time, is always a happy life. Thank you so much, ma'am. Now, I would like to invite Professor Prabjot Malli. Ma'am is a professor in child psychology at the Department of Pediatrics at PGI Chandigarh. Ma'am runs a child and adolescent counseling clinic at PGI. Ma'am's research interests are neurodevelopmental disorders like autism and ADHD. At her pediatric psychology clinic at PGI Chandigarh, the clinic diagnoses and manages more than 2,000 patients each year from the region. Ma'am also trains short-term trainees and has trained more than 100 students. And apart from this, ma'am has been organizing workshops on various aspects of psychology. In fact, I have been attending various workshops of ma'am, and the theses guided by her are around 80 in number. The extramural project that ma'am has taken up was the ma'am is was in charge of the Child Line project funded by the Ministry of Women and Child Development, Government of India from the year 2001 to 2011. Childline was a 24-hour free telephone helpline for children in need of protection and care. The Childline responded to more than 1 lakh calls and provided active intervention, including emotional support and guidance, medical and educational assistance and sponsorship, temporary and permanent shelter for runaway, lost or abused children, protection and rescue from physical, emotional, and sexual abuse, and repatriation. With these words, I invite Dr. Prabjot Malli to have a discourse with our students on mental health issues during COVID, building resilience amongst youth. Welcome to you, ma'am. Hi. Okay. So I'm going to talk specifically about building resilience among the youth during the pandemic. So because of the survey which was done, nearly 5,000 youth, and what they reported was that 96% felt that people believed that the lockdown was necessary, but they were severely impacted. 65% of them reported feeling very lonely, and 25% of them were sitting idle. In fact, studies conducted across the country have found that up to 37% people have shown signs of psychological distress. Up to 45% of adults have felt adverse effects on mental health, and 70% have reported that they've never been so stressed of now. Can you fix the problem with the... Ma'am, are you operating from two devices or it's one device only? Is it okay now? Is it better now? Yes, ma'am. Yes. Little better. Is it better now? Little better. Yes, ma'am. Yes. It is better. Okay. Ma'am, I think you need to mute one of your devices. Okay. Okay. So if we look at no, there is still an echo. Ma'am, please carry on.
Valli ma'am? And is there? Ma'am will join us back within a minute or so. Can you hear me? Yes, yes, ma'am, you're audible. Okay. Just a second. There is a problem. So if we look at the unseen toll of COVID-19, what we find is that there have been up to 400% increase in how many people have started to get mental health services, whether it's anxiety or whether it is depression. So we also did a survey. Can you hear me? Yes, yes, ma'am, you're audible. Yes. Okay. So we did an online survey on 600 people between 18 to 70 years. And what we found was that students, that means the younger people, females, people from lower socioeconomic status, they were the most vulnerable. When we asked them that what is it that really bothers you, all of them said that the uncertainty, the unpredictability, when will it end? We've seen that at least 35% of respondents have started to feel more lonely. And this is indeed surprising because most of the research work which has come in has been immediately after lockdown. Now we are almost 6 to 7 months after the pandemic. So it is obvious that these things have only increased and not decreased. In fact, the female respondents are the ones who feel the most lonely. In fact, social distancing may inadvertently lead to what we call social isolation. So what we really need to talk about is spatial distancing and social closeness and not social distancing. In fact, many now authors have started to argue that we may be headed for a second pandemic, which is going to be a mental health spillover from the novel coronavirus. We look at the data, there has been 200% increase in screen time. This could be partly because of the online classes, the Zoom meetings, the gaming, social media, and surprisingly, pornography. Now, this is data from India. There has been 200% increase in watching pornography in the last 6 months. And if you compare India with the worldwide data, far more people in India are watching pornography. And this cuts across male and female. So one should not feel that this is only something which males do. It is also what females do. And this is, mind you, data from only one website. So if you were to pool this data, it would be tremendous. So obviously, lots of us have not utilized our time well. There's also what we call increase in maladaptive coping. Smoking and drinking have increased during the pandemic. Now we are aware, as it is, that adolescents and youth have a lot of problem in leaving their parental home, getting jobs, or becoming economically independent. What is going to happen is that the pandemic may further extend what we call the failure to launch syndrome. And many of the youth will be suffering from what we call the Peter Pan syndrome. That means when children or the youth will avoid assuming adult roles. Moreover, the COVID-19 has forced 1.4 billion students to stay at home. More children, in fact, in India, lots of children have actually dropped out of school. This is going to really have a downside for girls because more girls will drop out, probably get married.
And the impact of what happened in the last 6 months of school closures, university closures, is not going to be short term. It is going to be long term. It is going to lead to higher unemployment, increased poverty, and more juvenile crime, disparities, and definitely more mental health problems. So a lot of people have said we are going to go in for remote learning, but this is actually going to increase the inequalities and the iniquities which are part of our society. 320 million students in India have been affected. In fact, the rapid shift to e-learning is going to increase the disparities. Not only 10% of households have internet and have a computer, and only 23% have an internet connection. So unless we can increase this, many people will be left behind. And even if we do have facilities, very few people actually can use the internet. So we know for now that Wi-Fi has actually become the most important one of our needs rather than the other needs that we talked about. There are also what we call the changes in the teacher-student learning environments. At least 50% of the teachers who were surveyed said they were very uncomfortable with online teaching. That could be because of poor digital literacy. Many of us are very uncomfortable in front of the camera. Also, we have difficulty in what we call engaging with our students. For example, I don't know whether you people are paying attention, whether you are enjoying it. So when we are doing a face-to-face teaching, we can change our talk or our lectures as per the cues, the non-verbal cues that we receive from people. We also feel very judged. So, and these virtual interactions, the Zoom calls, they are very hard on the brain. And this is what is leading to what we call the Zoom gloom. When actually the Zoom is very intrusive, it leads to what we call the fuzzy boundaries between workplace and home. And contrary to what people think, that people who are working from home are spending less time, what research has shown is that people who work from home are spending far more time at work than when they were at their workplace. So it is obvious that we need to become more resilient, more than ever during this post-pandemic time. So when we talk of resilience, we are talking not just surviving, but thriving. And resilience is not one thing. It can be many, many things. It is our ability to what we call bounce back. It is trying to grow from inside. In fact, this time that we have been at home is an amazing time to have utilized our time well. So resilience is a lot of things. It could be optimism, it could be impulse control, emotional awareness, flexibility. And I'll just talk about some things very quickly. We've already talked about the importance of exercise and mental health. Now, research shows, and this is data is based on 1.2 million individuals between the time of 2011 and 2015, cycling, gymming, running, jogging, all of them can bring about a reduction in your depression or your anxiety as much as 25%. And your cycling or your sports does not have to be prolonged. Even 15 to 20 minutes of exercise can bring about great gains. So let's look what happened during the pandemic. Surprisingly, and rather a very good, I would say, impact was that people actually took to cycling in a big way. And this was what we call from fitness to exercising to distancing. Cycling became the new norm. If any of you has visited Chandigarh, let me tell you, the roads of Chandigarh and the cycle tracks are full of cycles of all ages and stages of people. This is data from Bangalore, where they found post-pandemic, the number of the blue graph shows the number of people who took to cycling. In fact, I was looking at data from all around the world. There is a huge shortage of cycling. So this is a good part. And many people have realized that if you need to bring
increase your immunity, you got to get on and do some exercise. And we all know the importance of what we call the green time. So we tell all our children, you need to trade your screen time for green time. In fact, nature is one of the most under-recognized free means to fight depression and strengthen your mental health. So we've already talked of internal controls. So things that matter and things that you can control are really very minimal. And that is what we should be focusing on, and never mind the interruption that we've all faced. This gives us a great opportunity to what we say, grow from inside. So what is it that we can control? We cannot control the situation, but we can control our thoughts, our words, our actions, our emotions, and our behavior. So this is what we call the social emotional learning. And the moment you can improve your social awareness, your relationship skills, your time management, you will be able to take better, responsible decision making. So we don't have to wait for the pandemic to end. We have to start setting our goals, making plans, getting back to work, and reaching the goals that each one of us can have uniquely set for ourselves. The goals have to be SMART. That means specific, measurable, achievable, realistic, and timely. So this is the time we need to have, particularly the youth, have SMART goals. In fact, if we build up what we call assets, the inner assets, this is very much related to what we call thriving. And I'm going to talk of some internal assets that we can build. So if we look at the data in the last 7-8 months, what we found is that lots and lots of young people, the youth, have registered for what we call online courses. And 13% of all people who have registered are from India. And many of the courses are from Harvard University, which are free of cost. And that means they give you an opportunity to learn at your own pace. And the focus is on enhancing learning new skills and not just getting certifications and increasing your resume. So the new mantra is learn more and study less. In fact, 245% increase in the number of hours that children are now spending online and learning courses like management, home, working from home, strategic thinking, etc. So one of the positive emotions, a lot of people have talked about positive emotions, is what we call gratitude. So this is one of the simplest things that we can practice. In fact, this is called the 60-second strategy: appreciation, apology, aha. In fact, many classrooms all over the world start their classes by having their students get up and say something. Yes? Can you hear me? Hello? So we can start with what we call positive emotions. Another method we could use is what we say, repeat an affirmation. It could be anything. I can do it. Nothing is impossible. So this is something we call positive thinking. And I would like to spend a little time on what I say, act of kindness. In fact, during the pandemic, lots and lots of people have started to be kind, because kindness is contagious. The 5 side effects of kindness is makes you feel better, be happier, and you live longer. And I'm going to share a story from BBC, which carried this story about how people had started to leave flowers at places where they felt that people would come when they are depressed or they would try to commit suicide. And what they found was that when many people started to actually feel better, because what they called these random acts of kindness. So if you have to be kind
it should be random. It should be something that you just see somebody walking on the road and you help him. And kindness is contagious. You do one act, the person who watches you and the person to whom you have been kind will go on to do it further. And this is what we call the snowballing effect. So to be kind is more important than to be right. Many times what people need is not a brilliant mind that speaks, but a special heart that listens. And this is very, very true for people who are working in the area of mental health. So there are three important things that we talk about when we counsel people. One, build relationships, have genuine relationships, build routines, and try to be resilient. And I think this point is the most important. Any person who has one good friend, their resilience levels can increase manifold. So when we talk of friends, we don't mean having lots and lots of social contacts. When we talk of friends, are people who genuinely care for us, and friendships can really improve mental health of people across age groups. Also important, teaching youth life skills. I have trained so many short-term trainees, and I'm surprised that the first thing that I have to teach them is to be on time. Many of them have not learned this simple skill of being disciplined and being on time. What I say, tell them, before you learn to counsel, be reliable. So this is a great time to teach our youth some life skills. Now, many people would come to me and say, ma'am, we want to volunteer. And what do I find is that these people are trying to get admission abroad because there is a lot of points for volunteering. But in our system, hardly anybody volunteers or does something which they feel they don't gain. In fact, we need to learn from the youth of Japan, where they do everything right from cleaning of the washrooms, serving food, cleaning classrooms. This is basically a way to teach our youth to think what we call beyond oneself. It builds character and it builds resilience. Unfortunately, this is something which is sorely lacking in our society. And as teachers, is something that we need to inculcate in our youth so that they have the requisite life skills. The moment they have the life skills, they will not have the problem of what we call failure to launch syndrome. And of course, breathing exercises, mindfulness, lots of people have talked about it, so I won't dwell on that. And so what is it that we need on a healthy mind platter? We need physical time, we need focus time, we need connecting time, we need leisure, playtime, and we need downtime. That means when we don't do anything, we just relax. We need time in when we focus, and we need sleep time. And let's all get ready for a new normal. There are several changes ahead. And if we haven't built those skills and we haven't built our resilience, many of us are going to be struggling. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Prabhjot Malli ma'am, for giving your wonderful insights on what India is facing right now, that is digital divide, fitness requirements, social and emotional learning, getting adjusted to the new normal, and I'm sure it must have impacted many lives. We are grateful to you, ma'am. And now we just received a message from our Honorable Vice Chancellor, Dr. B.S. Kumar. He is busy in a crucial meeting at Chandigarh, and Dr. G.S. Batra, Dean Academic Affairs, Punjabi University, Patiala, is here to bless us on this occasion and to preside over the function. Over to you, Batra sir. Am I audible? Right, sir, you are audible. I'm not able to start my video, but anyhow, just a minute. Is okay? It's okay, sir. It's okay. Good afternoon to all of you. Esteemed speaker of today, Professor Dr.
Prabjot Malli, Department of Pediatrics, Advanced Pediatric Center, Chandigarh, PGI. Professor Dr. Promila Batra, Mental Health Professional, former Dean and Head, MD, University Rohtak. Professor Tara Singh, Dean Student Welfare, Punjab University, Patiala. Dr. Paramjit Kaur Gill, Additional Dean Student Welfare. Dr. Mamta Sharma, Associate Professor and Head Department of Psychology. Dr. Ajita, Additional Provost, Office of Dean Student Welfare. And Dr. Ruby Gupta, Counselor at Punjab University. Dear participants, students, and scholars, I welcome you all on behalf of Punjab University, Patiala, and thank all worthy speakers for sparing their valuable time for this event. I congratulate Dean Student Welfare and Additional Dean and rest of the officials, those who are involved in organizing. Dr. Ruby Gupta is entering very well, and other officials, those who are involved for organizing this webinar on the occasion of the World Mental Health Day. The presentation made by Dr. Prabjot Malli. So this is an excellent presentation. The impact assessment of COVID-19 on the mental health of the people and how we build resilience among the youth. She has very well explained about the goal orientation, how the people have been spending their time, how we need to adjust to the new normal, and this is, I think, going to be of great help to those who are listening to this presentation. And I'm sorry I could join very late, since there were other two webinars going on in the university organized by our engineering college, and another was organized by the Department of Political Science. So Professor B.S. Kumar, Vice Chancellor, has sent his best wishes for the success of this event, since he is busy in Chandigarh with another meeting. So though of course the theme of today's presentation and on the occasion of World Mental Health Day has already been unfolded by the learned speakers, I would like to say that this year's World Mental Health Day on 10th October comes at a time when our daily lives have changed considerably as a result of the COVID-19 pandemic. The past months have brought many challenges for healthcare workers, providing care in difficult circumstances, going to work fearful of bringing COVID-19 home with them, for students adapting to taking classes from home with little contact with teachers and friends, and anxious about their futures, for workers whose livelihoods are threatened, for the vast number of people caught in poverty or in fragile humanitarian settings with extremely limited protection from COVID-19, and for people with mental health conditions, many experiencing even greater social isolation than before. And this is to say nothing of managing the grief of losing a loved one, sometimes without being able to say goodbye. The current worldwide pandemic arose against an already dire mental health landscape that saw mental health conditions on the rise across the globe. About 450 million people live with mental health disorders that are among the leading cause of all ill health and disability worldwide, as per one of the World Bank reports. 1 person in every 4 will be affected by mental disorder. On health outcomes, accounting for 13% of the total burden of disease. This bleak picture necessitates that we ensure that mental health is prioritized now more than even before. The present program is an attempt to sensitize them that mental health is a human right. It is a time that mental health is available for all. Quality, accessible primary health care is the foundation for universal health and is urgently required as the world grapples with the current health emergency. We therefore need to make mental health a reality for all, for everyone and everywhere.
I'm glad that with the help of Dean Student Office, our counselor and psychology department, we have set up a mental health helpline also to deal with the problem of the mental health well-being of the students, faculty, and the staff since lockdown period, since during the COVID-19 period. Once again, I thank our worthy speakers for sparing their valuable time for this event. I am grateful to the Office of Dean Student Welfare for giving me this opportunity to be part of this event. I wish you all the very best for the success of this program. Thank you and Jai Hind. Thank you so much, sir, for your kind and precious words. Thanks a lot. Now I would like to invite Professor Dr. Tara Singh, Dean Students Welfare, Punjabi University, Patiala, to cast his vote of thanks. Professor Tara Singh, please. हाँ जी मैम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, हाँ जी आ रही है जी। हाँ जी, हाँ जी, साडे सत्कारयोग वाइस चांसलर प्रोफैसर BS घुम्मन साहब, डीन अकैडमिक डॉक्टर बत्रा जी, ते अज दे साडे एमीनेंट स्पीकर मैडम परमीला बत्रा जी, जिहड़े कि MD यूनिवर्सिटी रोहतक नाल तो उत्थे साडे नाल जुड़े ने, ते दूजे जिहड़े साडे एमीनेंट स्कॉलर अज दे हैगे सी ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਮੱਲੀ PGI ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਪਰਮਜੀਤ ਗਿੱਲ, ਮੈਡਮ ਰੂਬੀ ਗੁਪਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤਾ ਤੇ ਮੈਡਮ ਸੰਗੀਤਾ ਟਾਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੀਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਮਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਤਰਾ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਤਰਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਅੱਜ ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਮੀਲਾ ਬਤਰਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 34 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਫਾਰ ਆਲ, ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਵਪੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਟੋ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਲਿਵ ਐਂਡ ਲੈਟ ਅਦਰਜ਼ ਲਿਵ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਮੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਡਿਊਰਿੰਗ COVID-19 ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸਰਵੇ ਤੇ ਡਾਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਡਮ ਪਰਮਜੀਤ ਗਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਕਮ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਹੀ ਲਟੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟਸ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਡ ਡਾਕਟਰ ਮਮਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟ ਐਂਡ ਮਿਥ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡਮ ਅਜੀਤਾ ਨੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਨ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵੀ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਲਡ ਦਿਵਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡਮ ਰੂਬੀ ਗੁਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਗਲੈਕਟਡ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਡਾਕਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਬੂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਇਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੈਬੀਨਾਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਫੇਰ ਕਰਦਾ। Thank you all and thank you everyone. Thank you. Thank you so much. As all good things, they come to an end, and we end the meeting here to make a new beginning. Thank you so much. Thanks a lot, everyone.